पाकिस्तान में आपको पता है थिएटर की तरवीज के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल, जिसे हम पाकिस्तान काउंसिल कराची कहते हैं, बड़ा ही ज़ोर शोर से काम बड़े अरसे से जारी रखे और बहुत सी चीज़ों में, बड़े एवेन्यूज़ में। इनफैक्ट आपको शायद ये नहीं पता और हमने शायद आपको बताया नहीं होगा कि ये जो पाकिस्तान कराची आर्ट्स काउंसिल है, इसकी 4 अकेडमीज़ हैं। 4 अकेडमीज़ हैं, तो डिफरेंट जॉनराज में वो सारे काम करते हैं। अच्छा जी, एक नई वर्कशॉप और ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी बड़े ज़बरदस्त आजकल क्या उसे कहते हैं, बस कर रहे हैं ना एक्सचेंज प्रोग्राम। स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है। 4 हफ्तों पर मुश्तमिल ये वर्कशॉप होगी, जिसमें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से एक आर्टिस्ट आई हैं, फिजिकल थिएटर आर्टिस्ट हैं, Hannah Gaff, and she's here and she would be teaching students how to use their body. What she would be teaching before we speak with Hannah, ये हमारे साथी हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि वो अदाकारों को स्टेज पर अपने जज्बात का इजहार और बॉडी लैंग्वेज पर मजीद बेहतरी पर ट्रेनिंग देते हैं। मतलब ये बड़ा एक आर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब स्टेज पे आप एक्सपोज होते हैं और एक ही टेक होती है। How to use your body and emotions to tell your story. बहुत ही आला आपने की है। Hannah हमारे साथ है और साथ है Welcome to Pakistan and welcome to Geo Pakistan, Hannah Gaff. And welcome Ehsan to you as well. Ehsan to you as well. तो Ehsan, first we'll ask Ehsan कि इनका बताएं कि इनको भी आपने बुलाया और एग्जैक्टली आप लोगों का क्या करने का आप लोग सोच रहे हैं? कैसे ढूंढते हैं आप कि कोई अच्छा यहाँ से ये शख्स आए और फिर हमें सिखाए? ये बेसिकली बुनियादी तौर पे जो अहमद शाह साहब हैं, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, उनका जो ब्रॉडर विजन है इन अकेडमीज़ को लेके इन पर्टिकुलर, उसका ही एक जो है ना स्टेप है उसकी तरफ कि बाहर से जो स्पेशलिस्ट हैं म्यूज़िक, डांस, थिएटर के, वो आर्ट्स काउंसिल आएँ और अकेडमी में इन बच्चों को जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेशनली ग्लोबली क्या चल रहा है, उनको ज़रा ये एक्सपोजर मिले फर्स्ट हैंड डायरेक्टली स्पेशलिस्ट से। तो ये पहला एक्सचेंज प्रोग्राम है। Hannah Gaff आई हैं, म्यूज़िक के भी स्पेशलिस्ट इस साल आ रहे हैं, कुछ डांस के भी आ रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसका मकसद ऑफ कोर्स यही है कि एक तो हमारा कनेक्शन ग्लोबल वर्ल्ड से बढ़े, इन बच्चों के एक्सचेंज प्रोग्राम्स अगले स्टेज के अंदर ये बच्चे भी जाना शुरू करेंगे, इनको भी हम भेजेंगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। तो ये पूरा आना जाना लगा रहेगा। Hannah, you are a physical theatre artist, and let's be honest, we are hearing this term for the very first time. Physical theatre artist. We always say theatre artist. So how do you differentiate a theatre artist with a physical theatre artist? As in, would you kindly explain this to us? Yes, of course. So obviously, an actor is always in their body. But when we talk about physical theater, it's with an emphasis on how we use our body to share our emotions, to tell a story, and by doing so, to be more full as an actor on stage. So we'll still use text, but our whole body is speaking the text. Right. So आप डायलॉग्स पर तो इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। Let us translate first. So आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जिस्म से, अपने हाथों के इशारों से, अपने चेहरे के तासुरात से बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये शायद आपको बोलने की जरूरत भी ना पड़े और आपकी बॉडी लैंग्वेज बताए कि आप सैड हैं या बहुत खुश हैं, कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए। वाह वाह वाह, मतलब वो तो एक नेचुरल टैलेंट है। एक्चुअली यही बात है। We think that actors have this natural inbuilt talent where they give their emotion and all, but this is an art form where you can learn without even speaking. Audience can tell what this character is trying to emote. Is that right? They could, yes. So that our bodies naturally respond when we have an emotion, when we have a thought. Our thoughts are connected. So yes, without text, we could tell whole stories. I mean, you can think about the old silent movies, mime. Where the eyes would be very expressive, the use of hands would be a lot more. The whole body, everything's bigger. Physical comedy, the Charlie Chaplin. A little exaggerated too. Sometimes, yeah. I mean, if you're speaking without words, you have to be very clear and specific. And theatre is, anyways, exaggerated when it comes to emoting something physically. And Hannah, does this only include your body movements, or you use other mediums like dance or maybe puppetry to tell your story? Is that also a part of physical theatre? Yes, physical theater is a very broad term for and holds many different art forms. So puppetry, clowning. My theater company in the US, we use martial arts, dance, gestures, which like big physical gestures to tell stories, to create character. So it holds a lot. And how has the experience been with the students here? Are they receptive to your teachings? Is there a language barrier as well, or theatre actually,
there is no language barrier in theater anywhere you go. We expect that actually. Well, the beautiful thing about teaching physical theater is that my life work is telling stories with my body and communicating through body language. So, of course, there's a language barrier. Okay. But in terms of the work that I do in the teaching, I think there's a lot that can be absorbed even without understanding. But, you know, the students are wonderful, and sometimes they translate for me. And Hannah, to have a we are better doing right now. understanding, like if I want to say that, all right, I'm having a great time here. For instance, let's talk about you. We're assuming that you are having a great time here in Pakistan. We hope that you are. On theatre, if you are teaching your students how to emote that, what would you tell them? So happiness maybe, or just Using your contentment, hands or and being movements. sad, Can you or- please demonstrate a little for us? Sure. Well, I like to teach using through experience. So one exercise I will lead is asking students to, you know, okay, what is it like? Let's start to be joyful. Let's be happy. Maybe laugh a little. Like we'll start at a low level and then it gets bigger. And as it gets bigger, what are you noticing happens in your body as you start to laugh? And they'll say, well, my chest opens. My head comes up. My arms, you know, I start to be more open. Etc. And it's, you know, it's The different. eyes become brighter. Eyes become Yeah. brighter. The world, you take more in. अगर आप हैना का क्लोजअप देखें तो दिस चेंज इन एक्सप्रेशन इज वेरी एविडेंट इन हर Yeah. face अभी is वो हमें there. सिर्फ बता रही है कि वो किस तरह सिखा रही you're है, just लेकिन explaining that and we So could see Hannah, the does change that on your mean that expressions. you can actually draw out any emotion from inside you according to the demand of the character or whatever it is? So if you are sad, or if you are supposed to act clownish, or you know, or very serious, if you're a politician or whatever your role might be, you can draw that from within. That's a great question. I would say yes, of course. And there That's are the quality of a great artist. yes, Yeah, but That is in what you're teaching Yeah, but precisely. there are multiple ways into that. I mean, in Stanislavski, which is a theater method, it's very psychological, and so you find your emotion and your character by remembering times that you were sad. Yeah. And so you're thinking. And in the physical theater, you're noticing what the body does when you're sad. It comes in, your eyes come down, and as you do those things, you actually can feel the emotion, and the audience sees the truth of that emotion. And for me, it's easier to come in that way than to think, okay, I'm sad now. What was it like when I'm sad? I mean, you have to tap into a memory maybe to get there. That's what you're That's saying. kind of the Stanislavski theater training method. And then I'm saying physical theater, we kind of come in through the body. So अगर आप अपनी बॉडी को इस हिसाब से ढाल लें, अगर आपने उदास कोई कैरेक्टर प्ले करना है, तो जिस तरह आपकी बॉडी उदास, जिस तरह आप दिखते हैं, नजर आते हैं, अगर आप अपने आप को उस तरह कर लेंगे तो आप अंदर से महसूस भी करना शुरू कर देंगे. This is vice versa basically. Interesting है. At times हमें लगता है ना कि if we feel something from inside, from within, then our body would emote it. This is the actual reverse of it. अच्छा ऐसे इस सारी ट्रेनिंग का जो हना कराएंगी टू द स्टूडेंट्स, वेयर आर यू टेकिंग इट? व्हाट्स द एंड रिजल्ट ऑफ इट? क्या प्रोडक्ट आप लोग और इसमें सिर्फ आपके रजिस्टर्ड बच्चे जो हैं उसी वही सीख सकते हैं, इनसे और भी कुछ लोग अच्छा, रजिस्टर्ड बच्चों के लिए तो ये पूरे महीने का है, लेकिन साथ साथ हम कम्युनिटी आउटरीच भी कर रहे हैं. आपको पता है हम यूथ फेस्टिवल्स भी करते हैं, तो हमारा एक बड़ा डाटाबेस है हमारे पास. हम कॉलेजेस भी इनको लेकर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस, ताकि वो बच्चे जिनको तो ज़िंदगी में शायद कभी एक्सेस नहीं मिला होगा इस तरह के आर्ट का, उनको भी एक्सपोज ज़रा हम करें कि ब्रीफली थोड़ा सा कि एक्सप्रेशंस, खास तौर पे हमारे बच्चे जो हमने जज्बात दबा के ही रखते हैं, ये एक बड़ा अहम काम है जो हम करना चाहते हैं कि उनको हम जरा बताएं एक्सप्रेस करना ज़रूरी है ज़िंदगी में. तो सिर्फ इसका एक थिएटरिकल और एजुकेशनल पर्पस, थिएटरिकल तो है, एजुकेशनल पर्पस भी है कि हम ओपन वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं वीकडेज के अंदर. मंडेज को हम करेंगे, और ये आर्ट्स काउंसिल की पेज पे सब जाके जो है, जो भी लोग सुन रहे हैं
बच्चे हैं, नोबी और एवरीवन हु इज़ लिसनिंग, वो जाके इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो आएँ, ये गाइड थ्रू करेंगी, वहाँ पर हम वर्कशॉप करेंगे और गेट टुगेदर भी है, मीटअप भी है। तो उसमें इसी पे फोकस है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है ना, वो आज के दौर में खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हना इज हियर फ्रॉम द मतलब यूएस, इस इतना 15 मिनट की work है, कॉन्वर्सेशन इतनी में मेरा दिल कर experience रहा है है। कि मैं इनकी क्लास जाके ले। हाँ, क्योंकि ये अदरवाइज आप I feel like attending one of your classes, Hana. एंड कैन आई जस्ट से इन कंक्लूजन के इनबिल्ट टैलेंट तो होता ही है, और बड़े कम पाकिस्तान में मौके होते हैं कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीख सकें। सो दिस इज वन ऑफ दोस। I mean, this is a great opportunity. I would also like to emphasize on the fact कि ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से तारीख में पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने तमाम अपनी फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एक जगह जमा कर दिए। पहले मैंने कभी होते हुए पाकिस्तान में नहीं सर देखा। पाकिस्तान के किसी इदारे में वो सब कुछ नहीं होता जो आर्ट्स काउंसिल कराची में होता टॉप है। ऑफ द टॉप लोग जितने भी हैं, म्यूजिक के, डांस के, थिएटर के, एजुकेशनिस्ट हैं। और आर्ट्स काउंसिल में भी इससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था। ये अहमद शाह भाई, अहमद शाह साहब साहब की जहाँ मेहनत होंगे है वहाँ जिसकी वजह होगा। से ये सारा कुछ होता है। आई होप कि काम इसी तरह चलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई Thank you, होप यू Hana. एंजॉय Thank you. योर स्टे इन पाकिस्तान एंड एहसन, थैंक यू सो Thank मच। you so Thank you, much. Ahsan. Thank you अच्छा for जी, having us. तो ये सब कुछ आप इनकी वेबसाइट से, फेसबुक पेज वगैरह से आप देख सकते हैं।